morning, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students, scholars and sportsmen, teachers and trainers, professionals and professors, advocates, advertisers, administrators and advisors, those who are listening from the field of religion, science, spirituality, arts, commerce and engineering. I, Dr. Rakesh from USA, heartily, cordially welcome all of you. Today, scholars and learners are being suggested and advised by the founder of Shri Ram coaching classes, Sangria, Rajasthan. It is really nice time, nice place and nice action of listening with 100% present sense of mind that will make you able to understand your unread, unspoken, unheard and unwritten materials, study materials related to your competitive classes. You will get yourself, you will feel better, nicer and finer after listening the truth of science and spirituality from our founder, creator, generator and operator of this institution. Sir, our Indian land is known as the land of initiators and beginner starters. In India, we have the greatest feature, unity and diversity throughout the world. Everywhere in all the countries of the world, our President Prime Minister Narendra Modi ji appealed and addressed to the world that we are one, whether there are adversities, varieties on the basis of color, caste, language and all that, but our India has the greatest feature in the form of oneness, unity, and it has its own distinctive feature. In this series, we have started and we have discussed yesterday Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi. Today we will discuss Gautam Buddha and Dr. APJ Abdul Kalam. Gautam Buddha, who started Buddhism, Mahavir Swami, who started Jainism, and Swami Vivekananda, who started Ramakrishna Mission. Our Indian land is the land of starters. Out of them, Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the starter of Sikhism. When a scholar, when a learner goes to the teachings of our forefathers, foretellers, free thinkers, messengers, then they understand that how our India has diversities and adversities, but we have the great social, spiritual, political, economical values with our nation. How we can understand these things? It is really remarkable, matchless, incomparable in the history of the world of the literature. Worldly literature that is explained by the different persons who came in India. As Vasco da Gama discovered India in 1498 and Shri Guru Nanak Dev Ji born in 1469. In this 14th or 15th century, William Shakespeare born in 1564 and this was the starting of teachings of Saint Kabir. So our whole land in the ancient time, medieval history, ancient history and modern history, when we go through the words, ideas, thoughts of our inspirers, motivators, those who came to recreate, to regenerate our generation. Okay, sir, today we will discuss about Gautam Buddha, who came on this land, means Indian land.
and we celebrate his initiation as Buddhism. Sir, please tell us about that personality who is known as the personality of personalities. जी सर. नमस्कार सर, जय श्री राम. आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद. मोस्ट वेलकम. और सर आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी में. तो उनके बारे में और उनकी माता कौन थी, पिता कौन थे. He born in Lumbini, and who was his father and mother. Today we will discuss about his whole background and history of that greatest initiator of Buddhism. तो सर उनका जन्म था जो लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व ईसा वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा संशोधन के घर में हुआ था. He born in the dynasty of Sansodhana in Lumbini. उनकी माँ का नाम महामाया था. His mother's name was Mahamaya. कोल्य वंश से थी. She was belonged to Kolya Vans, Kolya dynasty. जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ. Who died after the birth. उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था. He was brought up by his maternal parents. 29 साल की आयु में विवाहित प्रांत के एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल. In 29 years, और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए he sacrificed his life for the salvation and for attaining the emancipation. मार्ग एवं सत्य दिव्य. He provided the truth. ज्ञान की खोज में रात्रि में For the divine glimpse he went throughout the night. राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए. He sacrificed his personal materialistic life and went to the forest or jungle. वर्षों की कठोर साधना के पश्चात after many years of his struggle, बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे. he went Bodh Gaya in Bihar. उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. He got enlightened under a tree. और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए. And he changed himself in the form of Gautam Buddha from Siddhartha. लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में था. This Lumbini forest was in the forest of Nepal, जो नेपाल में है. which is in the Nepal now. लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र कपिल वस्तु और देव है. Lumbini forest in Kapilvastu of Nepal के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम रुक्मणीदेही नामक स्थान के पास स्थित था. It was at the place of Rukmani in the remote desert. कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी, Queen of Kapilvastu, Maharani Devi, अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई. she felt pain of pregnancy. वही उन्हें एक बालक को जन्म दिया. She born a baby there. शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया. Born baby who was newly born, his name was Siddhartha. गौतम में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए. In the caste of Gautama, he was known as Gautam Buddha. क्षत्रिय राजा सुशोधन उनके पिता थे. And the king Kshatriya who was his father. परंपरागत के In the ancient time, कथा के अनुसार as per the thoughts of the people, सिद्धार्थ की माता का
mother of Siddhartha, उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ था। after 7 years, she expired. शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, It was the name of the new baby born Siddhartha, जिसका अर्थ है whose meaning is वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जमा हो। who has enlightened, whose objective was only to salvation and emancipation from this materialistic goods and words. जन्म समारोह के दौरान At that time, साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से Sadhu Drashta from his residence घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। declared that he would be not a common, but he will do something different, uncommonly and extraordinarily. सुशोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया। After that, he was baptized or named, और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। and their Brahmins were invited to name him. सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की। Everyone forecasted and foretold about that personality. कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। That infant will be a king or an extraordinary king. दक्षिण मध्य में नेपाल में स्थित In the middle east of the Nepal, लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज at Lumbini, अशोक ने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति, Ashoka 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति 3rd BC में एक स्तंभ बनवाया था। Ashoka, who built a remarkable statue in his memory. बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से यथावादा देशों में Buddha's birth was widely known as. सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। Siddhartha was the means of affection and love for the worldly people. उनका परिचय उनके आत्मिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। His introduction is evident and proved by his activities. घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलते लगता तो सिद्धार्थ उनके थका जानवर वही रोक देता। Whenever he observed that there is frost from the mouth of the horse ridings, then he stopped them there. और जीती हुई बाजी हार जाता। And he lost his winning race. खेल में भी सिद्धार्थ को खुद का हार जाना पसंद था। Even Gautam Buddha accepted defeat equally. क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना He never discriminated between winning and defeating, winning or losing. उससे नहीं देखा जाता था। He could never see defeating or winning of any person. सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त Siddhartha's cousin द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राण की रक्षा की। he was helped by his cousin. उसके प्राण की रक्षा की And saved him. शिक्षा सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ाई। Siddhartha read Vedas and Upanishads, our ancient scriptures of Indian mythology. राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। He learned war strategies. कुश्ती और घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में। He learned different types of sports as well horse riding and throwing. कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। Nobody could defeat him. 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का
In 16 years of his age, Siddhartha, कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। he got married with Yashodhara. पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए। He accorded as per his father's rituals, वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में customs and traditional background. वे यशोधरा के साथ रहने लगे। He spent his life with Yashodhara. समस्त भोगों से युक्त After having all the materialistic luxuries, महल में यशोधरा के साथ he spent his life with Yashodhara. रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र He spent his life where his son, राहुल का जन्म हुआ। where his son Rahul born in that luxury palace. लेकिन विवाह के बाद But after marriage, उनका मन वैराग्य में he vanished. चला गया। He thought to get rid from he thought to get rid emancipation and salvation from this materialistic world. सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। For the peace and prosperity of his soul, he went in the jungle. राजा शोधन ने King Yashodhan, सिद्धार्थ के लिए भोग विलास luxury life of Siddhartha, का भरपूर प्रबंध कर दिया। sacrificed 3 ऋतुओं से लायक 3 seasons, 3 सुंदर महल बनवा दिए। 3 palaces, वहाँ पर नाच गान मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। and provided different type of cultural programs for their entertainment. दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। There were many slaves and servers in their services, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। but everything these could not bound and cover the personal life of Gautam Buddha. बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की ओर सैर पर निकले। One day Gautam Buddha went in the visiting of a garden. उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। He saw a person उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, whose teeth fallen down and hair were turned to grey. शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ। Whole body was turned into weakness. वह सड़क पर चल रहा था। Hardly he was walking on the road. दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला, Again when that person came, तो आंखें his eyes आगे एक रोगी आ गया। observed a patient उसकी सांस तेजी से चल रही थी, whose heart was throbbing fastly and speedily, unbreakably. कंधे ढीले पड़ गए थे। He felt totally fed up. बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था। His arms dried and his stomach was चेहरा पीला पड़ गया था, दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। totally changed and his color was changed into yellow color. तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। Ultimately, Siddhartha Gautam Buddha saw a person who was on the journey of his ultimate life, ultimate journey. 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। 4 persons was carrying his funeral. पीछे पीछे बहुत से लोग थे। His hobbies was led up by many people. कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, was crying and some was beating for his departing from this earth. कोई अपने बाल नोच रहा था। Some was unbearably feeling about his death. उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को। Then Gautam Buddha thought that it was the meaningless lifetime जो जीवन को सोख लेती है, which has dried his life. धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। It's the meaninglessness
of the disease that brings change in the health. विकार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना ध्याय पूरा कर देता है। Meaningless, that everything in our life that we have that is destroyable and immortal, mortal. Everything is mortal in this materialistic life, but Gautam Buddha thought about the immortal and unperishable journey that was related to the celestial abode. मन में प्रश्न आया, बीमारी, बुढ़ापा, मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? He thought that these are very common things that we observe in this life, in this materialistic life. Sometimes we become ill. चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला। Then he went at the fourth journey to visit. तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। He saw a person who sacrificed his personal life as a monk. संसार की सारी भावनाओं, He thought about the overwhelmings of the world. और कामनाओं से मुक्त प्रचलित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। That monk attracted Gautam Buddha. सुंदर पत्नी यशोधरा, That beautiful wife Yashodhara. दूध मोहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे Rahul and Kapil was two. These were the very enchanting luxuries that he was involving with them. राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। He sacrificed his personal life for attaining the eternal and immortal journey. वह राजगृह पहुंचे, वहां शिक्षा मांगी, भिक्षा मांगी। He went there and asked for. सिद्धार्थ घूमते घूमते अल्लाह का कलाम के उदक राम पुत्र के पास पहुंचे। After wandering, Siddhartha went to meet to Ramputra. Yes. उनसे योग साधना सीखी। He learned divine powers, how to get the divine power and how to concentrate, how to do meditation. He learned from him. उनसे समाधि लगाना भी सीखा, पर उनसे संतोष नहीं हुए। He also learned that how to be meditated, but he was not satisfied. वह कुरुवेला भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने तपस्या भी बहुत की। Then he went to Vela and he meditated there. सिद्धार्थ ने पहले जो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की। Siddhartha firstly started his meditation. बाद में उन्होंने हर प्रकार के आहार लेना बंद कर दिया। But after he stopped to take any kind of food, उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। his body turned into dry. उनको तपस्या करते करते 6 साल बीत गए। It was the 6 years of his meditation. उनकी फिर भी तपस्या सफल नहीं हुई। But he could not get success in doing meditation. शांति है तो बुद्ध का मध्य मार्ग। For the peace and prosperity, his aim of midbrain. एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां पर नजर आई। He saw. एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां नजर आई। He saw an event जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहा था। where Gautam Buddha was meditating. उनका एक गीत उनके कान में पड़ा। He learnt a song from that event. जिसका नाम था वीणा वीणा की तारों को ढीला मत छोड़ो। Whose name was वीणा की तारों को ढीला मत छोड़ो. ढीला छोड़ देने से If you let it loose, उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। then this वीणा cannot create the melodious voice. पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। But do not try to tie it tightly. बात सिद्धार्थ को जच गई। Thereby it may create an inconvenience, and Gautam Buddha accepted it heartily. वह मान गए कि हार प्यार से ही नियमित योग सिद्ध होता है। He accepted that it is the defeating, it is the losing that tell us a lot about the actuality of life. अति किसी की बात अच्छी नहीं। Everything he accepted from others.
किसी भी प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग ही ठीक होता है। So for getting anything, it is the way of the middle mark or middle way. और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। To get rid from the materialistic world and to obtain the salvation, we are to do struggle hard for in our life. बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम थे। Buddha's first teacher was Alar Kalam, जिनसे उन्हें संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। who taught him sannyasa. बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। Gautama Buddha at the edge of river did hard work in meditation. अब सुजाता नाम लड़की के हाथों से खीर खाकर उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। After eating rice pudding from the Sujata girl, he broken his fast. वह बेटे के लिए पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने थाल में गाय के दूध की खीर बनाकर पहुंची थी। She reached there after preparing rice pudding personally for that personality. सिद्धार्थ वहाँ ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। Siddhartha was sitting with full of concentration in meditation. उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। She thought that this is the body of the tree who is totally involved with that super spiritual power of Lord or God. सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की। Sujata respectedly served rice pudding for Gautama Buddha कहा जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी सभी की हो। and told and requested to God that as I have wished fulfillment of my wish, उसी रात को सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। at the same time Gautama Buddha got success. उसे सच्चा बोध माना गया। It was the true emancipation and salvation